So hello guys, welcome back to this another video, and in this video we are going to solve the next problem of our series which we are doing. So for those who are coming for the first time, so we are solving this FRAZ DSA sheet, and we started with dynamic programming level 1 and especially the linear DP section, right? So we have successfully solved 7 problems of this problem sheet, and we are going to solve today best time to buy and sell stock problem, which is easy, and I will try to solve and give the explanation for this video quickly because this is easy problem. And so yeah, recording is on. Let me open it. So let's try to read this problem. So this problem states that you are given an array prices where prices of I is the price of a given stock on ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in future to sell that stock. So if you buy that stock on ith day, you can only sell that stock on I plus one or any day which is more than I. Okay, which is after I. Return the maximum profit you can achieve from these transactions. If you cannot achieve any profit, return zero. Okay, so let me share my whiteboard, and there we will discuss how we can solve this problem. Okay, so let me share my iPad. So let's say this is days, and this is your profit. It's a price of stocks. So the problem states that if you if you buy some stock at ith day, the you can sell at any day which is I plus one, I plus two to last day. मतलब तुम अगर आई डे को खरीदते हो, अगर तुम फर्स्ट डे को खरीदते हो तो तुम सेकेंड डे से लेके आगे जितने भी डे अवेलेबल हैं फॉर सेलिंग दैट स्टॉक यू कैन सेल दैट स्टॉक, राइट? So if you see this example, so let's say if you buy your stock on the first day, if you buy your stock on the first day, so buy cost is you buy at rate at 7 rupees. Okay, so when you will sell that stock to get maximum profit, so what you will do, you will try to find out which day you can sell maximum. So if you buy at 7 day, then you can sell at any day. So that if you look, there is no any day where the cost of that stock is more than 7. So you will always be in loss, always be in loss if you buy it on first day, means zeroth day. Now second option, you can buy on this day, first day. So the buy cost is 1 rupees. So if you sell that stock at any day, either 5, 3, 6, 4, you will always be in profit. But when you will sell that stock to get maximum profit, you will sell that stock on this day, 6th, sell added at 6 rupees on fourth day. So in that case, profit will be 5 rupees. So this is one possibility. Or also you can buy it on third day. So the buy cost will be 5, sell cost will be when you will sell. If you sell on this day, you will be loss. You will be on loss. If you sell on this day or this day, you will be in profit. But if you sell on this day, you will be in loss. So you have to sell on the fourth day. So if you sell it on a fourth day, you will get 6 rupees. So profit will be at rate 1 rupees. So there are several possibility. Also, you can buy on this day. If you buy on this day, so buy cost will be 3 rupees. So if you sell, so you can sell on this sixth day and this day, fourth day and fifth day where the cost is 6 and 4. So if you sell it on fourth day, you will get 6 rupees. So six is better price. So you will get profit of 3 rupees. So out of this all
this is the best possibility. This is the best possibility when you can, if you buy with this strategy, you will get the maximum profit. So if you closely look at this problem, what you are doing, you are trying to find out the day where the cost is as minimum as possible, and you are trying to find out the day where the cost is as much as possible in the right side of that index. So for that, what you can do, you can pick a particular day for each day, and you try out to find out the maximum day on the right side of that element. So if you use that loop, if you do that, so it will take order of n square. So for one loop for buy day, and one more for loop, so buy day plus वन से साइज तक, prices के साइज तक, and you will maximize your answer. So this is the brute force approach. So we are not going to do that. So we will directly jump into the our problem formulation. So just try to think this problem in another way. So what if you decide to just consider the particular day as selling day. So you decided that, hey, this day I want to sell. So if you want to sell on the particular day, what will be the day which where we have bought that stock, so that I can be in profit, and I will be in maximum profit when. So if you bought that stock in the minimum price, which is left side, like, let me tell you with the example. So let's say if you want to sell this on I day, so this is the selling day. So you want the answer if you want to sell this on that day. So you will get the maximum profit if you bought that stock on some day between this, when the cost of that stock is minimum. ठीक है, तो दिस इज और फंडा. बट इस फंडे को सॉल्व करने के लिए हम उसी अप्रोच से, इसको करने के मल्टीपल वे है, बट मैं इसको जो हम अप्रोच फॉलो करते आ रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का, हम उसी को यूज करते हुए करेंगे. तो हमारा वो जो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है डीपी का, डीपी फंडा हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, डिफाइन योर डीपी स्टेट. तो डिफाइन और डीपी स्टेट मतलब हमारा एक डीपी ऑफ आई होगा इन लीनियर डीपी. इससे नहीं काम चलेगा, हम लोग और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टेट वेरिएबल. डीपी ऑफ आई क्या बोलेगा कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पाएंगे, हाउ मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन वी सेल दैट स्टॉक ऑन आइथ डे. तो हम डीपी ऑफ आई में स्टोर करेंगे ये सारी वैल्यूज, जो कि हमें बताएगी कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ हम आई डेट सेल करते हैं. नाउ सेकंड थिंग, आंसर्स फॉर स्मॉलर वैल्यू. सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा. सो वो हमें कैसे मिलेगा, तो देखो हमारे पास जस्ट थिंक वी हैव जस्ट वन एलिमेंट, सो वी हैव जस्ट वन डे. तो डीपी ऑफ जीरो व्हाट विल टेल, what will be the maximum profit if you can sell that stock on id day. So for dp of 0 होगा. इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि तुम्हारे पास एक ही डे है, और एक डे में बिना खरीदे तुम बेच नहीं सकते. यू डू नॉट हैव स्टॉक, हाउ कैन यू सेल ऑन दैट डे. ओके, सो at least size 2 is required. So let's move to size 2. Let's say it's a 2 and it's a 3. Now dp of 2, dp of 1 will tell what will be the maximum profit you get when you sell that stock on this day. तो दिस डे के लिए क्या चाहिए तुमको, इसके पहले का मिनिमम चाहिए. तो तुम एक और काम कर सकते हो, एक मिनिमम वेरिएबल स्टोर कर सकते हो जो कि मिनिमम लेगा. तो अभी करंट मिनिमम 2 है, तो तुम इस मिनिमम को यूज करोगे. तो डीपी ऑफ 1 क्या होगा, तुम 3 रुपए में बेचना चाहते हो, और 3 से पहले सबसे मिनिमम क्या था, 2 था.
तुम्हारा आंसर डीपी ऑफ वन हो गया वन। ठीक है। नाउ तुम ये, ठीक है, तुम ये कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, डीपी ऑफ टू। अब तुम्हारे पास थ्री लेंथ का है, अब तुम्हारे पास फाइव है। ठीक है। अब तुम्हारे पास जीरो वन टू। अब तुम डीपी ऑफ टू क्या बोलोगे, तुम बेचना चाहते हो 5 रुपए में, 5 रुपए में, बट तुम्हारे खरीदने की पॉसिबिलिटीज अब हो गई कि तुम या तो 3 रुपए में खरीदोगे या तो 2 रुपए में खरीदोगे। तो तुम कितने रुपए में खरीदोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, तो ऑफ कोर्स जो मिनिमम होगा उसी में। तो तुमको ये मिनिमम है हमेशा इसके पहले से, जैसे ही तुम नेक्स्ट पे आइटरेट कर रहे हो तुम अपने मिनिमम को अपडेट कर दो। मिनिमम यहाँ पे टू और थ्री का मिनिमम हो जाएगा विच इज अगेन टू। तो तुम अभी भी तुम इसी दिन खरीदोगे, सेकंड फर्स्ट डे पे खरीदोगे जब उसकी प्राइस टू थी, तो तुम इसको यूज करोगे तो तुम्हें थ्री मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से जस्ट तुमको कंटिन्यू करना है, तो तुमको हमेशा मिनिमम को अपडेट करना। अब योर मिनिमम विल बी टू ऑफ थ्री ऑफ फाइव, सो अभी भी टू रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे हमारी कोई भी वैल्यू हम किसी दिन भी बेचे तो हम उसके लेफ्ट में जो सबसे मिनिमम होगा, किसी भी दिन कितने रुपए में भी बेचे तो जो लेफ्ट में उसका जो सबसे मिनिमम मिनिमम प्राइस होगा तुम उसको खरीदोगे, उस दिन खरीदोगे, तभी तुम प्रॉफिट में रहोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट में रहोगे। तो इसी तरीके से अगर तुम जनरल देखो तो जो तुम्हारा डीपी ऑफ आई होगा वो क्या होगा, मैक्स ऑफ तुम्हारा करेंट डीपी ऑफ आई, या क्या होगा तुम्हारा जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई मीन्स जो प्राइस ऑफ आई है उसमें से जो तुम मिनिमम इन लेफ्ट एक्सक्लूडिंग करेंट प्राइस, ये तुम निकाल दिए, तुम्हारा डीपी ऑफ आई में हर आई के लिए आंसर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास डीपी ऑफ आई में सारे आईज के लिए आंसर है, मीन्स कि तुमने सारी पॉसिबिलिटी ले ली, हर दिन बेच के देख लिया, तुमने सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो ट्राई आउट कर ली, कि तुमने मिनिमम में खरीदा और हर एक दिन बेचने का ट्राई किया, और उसमें से जो जिस दिन भी तुम्हें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वही तुम्हारा आंसर है। तो इस जो आंसर होगा तुम्हारा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा मैक्स ऑफ डीपी जीरो, डीपी डीपी वन, डीपी टू, सिमिलरली डीपी एन माइनस वन, ये जो तुम्हारा मैक्स होगा वही आंसर होगा। ठीक है। ना कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि सारे पे आइटरेट करने हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि हम एक डीपी एरे बना रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल solution of this problem. This problem is pretty easy, so that's why I'm not taking that much time. Let's directly jump into the implementation part. So we will, as usual, we will create vector of int dp prices dot size, which will tell dp of I will speak. Let me comment it. dp of I will tell max profit you can get if you sell that stock at eight day. Now, if you sell that stock on 0 day, so dp of zero means zero. क्यों लिख रहे हैं? You don't have any stock with you to sell. ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट सेकेंड डे से, जब हम सेकेंड डे पे पहुंचे तो हमारे पास एक स्टॉक हो सकता है, मे बी हम उस स्टॉक को फर्स्ट डे पे खरीदे होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल बनाएंगे इंट बाई कॉस्ट, जो कि बोलेगा तो हमने फर्स्ट डे पे इसको खरीद लिया, तो अब मैं सेकेंड डे पे बेचने जा रहा हूँ, तो डीपी ऑफ आई बोलेगा कि सेकेंड डे पे बेचने का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो ये जो डीपी एफ आई में वैल्यू है या तो वो होगा, या तो मैं इस दिन बेच रहा हूँ तो ये हमारा सेल प्राइस हो जाएगा। तो आई नम्स ऑफ सॉरी प्राइसेस ऑफ आई जो होगा हमारा सेल प्राइस हो गया, और बाइंग प्राइस क्या होगा, तो जो हमारा बाई कॉस्ट में वैल्यू है वो बाई कॉस्ट होगा। अब हम जब नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बट हमको करेंट वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि ये मिनिमम हो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट डे फ्यूचर में बेचना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट में खरीद सकते हैं। सो आई विल जस्ट अपडेट बाई कॉस्ट विथ मिनिमम ऑफ बाई
cost by cost and nums of I, prices of I, ठीक है। रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ डीपी डॉट बिगिन स्टार मैक्स एलिमेंट डीपी डॉट बिगिन डीपी डॉट एंड, ठीक है। रिटर्न, दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट्स ट्राई टू रन इट। रन करने के देखते हैं। सो या इट्स अ प्राइसेस। Oh, something went wrong. Int is not a structure or union. What is wrong with this? Oh, okay, this is dot. I- Hmm. So it got accepted. Let's try to submit it. It should get accepted. So yeah, accept हो गया. So okay, bye bye for this video and see you guys in the next video soon with the next problem. If you like this video, please like the video. If you have any query, write it into the comment box. I will try to answer it. And let me mark this question as done. Next video, probably tomorrow, we'll see this problem, minimum cost for tickets. Thank you so much for watching this video. Bye bye.